Good morning, student. So today we are going to start our new subtopic, that is a changing countrysides. Okay, so you know what is countrysides? It is a village sites or a remote area, right? So under this subtopic we are going to discuss about 4 points, that is a popular perception of kings, okay, strategies for increasing production, other one is differences in ruler society, and the last one is land grants and new ruler elites. Okay, so let's start our first point, that is popular perception of kings. Okay, so as we have already discussed in our previous class, right? It's like what was the like kings, they used to consider themselves, okay, they like from Kushana's like evidences from we came to know that they used to consider themselves as god. Okay, at the same time, if we'll take the help of the Gupta empires, okay, especially the prasastis. Okay, so like we have already read one source also from that prasasti, that is from Pragya Prasasti. Okay, like his court poet Harisena has praised Samudragupta, who was one of the powerful ruler of the Gupta empire. So he described Samudragupta as a god. He considered himself as the god of wealth, the god of rain, god of ocean, or god of, as well as god of death. Okay, and he was the remover, or the like uh, like giver of or like remover of all the bad things. Okay, remover of sorrow. At the same time, he was the giver of all the prosperity, success, good, happiness, right? It was according to Harisena. Okay, about Samudragupta. But is this really true? They are really god-like? Okay, so in this point we are going to discuss whether it is uh, from the perception of the common people, as well as the people who used to reside in the countryside. Okay, so let's discuss. So first, I'll read, okay? Popular perception of kings. What did subjects think about their rulers? Obviously, inscription do not provide all the answers. In fact, ordinary people rarely left accounts of their thoughts and experiences. Nevertheless, historians have tried to solve this problem by examining stories contained in anthologies such as the Jatakas and Panchatantra. Many of these stories probably originated as popular oral tales that were later committed to writings. The Jatakas were written in Pali around the middle of the 1st century millennium CE. One story, known as Ganda Tindu Jataka, described the plight of the subjects of a wicked kings. This included elderly women and men, cultivators, herders, village boys, and even animals. When the king went in disguise and to find out what his subjects thought about him, each one of them cursed him for their miseries, complaining that they were attacked by robbers at night and by tax collectors during the day. To escape from this situation, people abandoned their village and went to live in the forest. As this stories indicates, the relationship between a king and his subject, especially the ruler population, could often be strained. Kings frequently tried to fill their coffers by demanding high taxes, and peasants particularly found such demands oppressive. Escaping into the forest remained an option, as reflected in the Jataka stories. Meanwhile, other strategies aimed at increasing production to meet growing demand for taxes also came to be adopted. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले पढ़ा था, अभी मैंने बोला कि राजा लोग अपने आप को क्या बोलते थे, दे यूज टू कंसिडर देमसेल्फ एज गॉड, है कि नहीं? सो उन्होंने बोला कि वो लोग गरीब लोगों का, पुअर पीपल का, कॉमन पीपल का क्या करेंगे, दे यूज टू रिमूव द सॉरोज, ओके, प्लाइड. सो उन लोगों ने उन लोगों के कोर्ट पोइट ने ऐसा लिखा है उन लोगों के प्रशस्ति में. बट if we really want to know the real perception about the commoners, of the commoners about the kings, okay, so if we were what the subjects means, someone who is under someone's control, that is subject. Okay, so we are living in an independent country, so we are not a subject, we are a citizen. Okay, so
ड्यूरिंग द टाइम लाइक उन लोगों के प्रजा जो कॉमन पीपल थे, व्हाट दे यूज टू थिंक अबाउट देयर रूलर्स. ओके, सो लाइक वी डोंट हैव इवन लाइक sufficient evidences or to reconstruct all the like perception of the common people. Okay, so like the reason might be most of the people, common people, they are like illiterate. Okay, they are not well literate. Okay, so like but we have some evidences that really left by the some experiences and the thoughtful people. Okay, so like if we really want to know, like if we really want to understand the perception of the common people, okay, the historians has provided some evidences. Okay, they have taken the help of the anthologies. Okay, what is anthologies means? Anthologies is the collection of poems. Okay, so essay anthologies like essay anthology का book like जटाकास. Okay, and पंचतंत्र. Okay, वहाँ पे like poem वगैरह क्या था, like collection of poems वगैरह था इन दोनों बुक में. दैट इज जटाकास एंड पंचतंत्र. सो इस दोनों बुक को क्या लिया हिस्टोरियंस ने, लाइक दे हैव टेकन टू अंडरस्टैंड द परसेप्शन ऑफ द कॉमन पीपल अबाउट देयर किंग्स. ओके, was they really consider themselves as the king or the demon. Okay, so let's do. So लाइक ये लाइक इफ विल टेक द लाइक पहले पहले क्या कहते थे कि लोग क्या कहते थे, दे यूज टू लाइक से समथिंग थ्रू देयर लाइक ओरल टेल्स. ओके, कैसे बोलते, लाइक बोल के क्या करते थे, सुनाते थे. ठीक है, सो लाइक पहले पहले पुराने ज़माने में बोल के सुनाते थे कोई कहानी वगैरह, या गांव गांव में घूम घूम के क्या कहते, ओरली दे यूज टू नैरेट द स्टोरीज. पर बाद में क्या हुआ कि बाद में लाइक आफ्टर in later periods, okay, people started what they started writing all these oral tales. Okay, like especially कहाँ पे लिखा था, like जटाकास. okay, जटाकास में लिखा था, जटाकास टेक्स्ट में लिखा था. so it was written in जटाकास में जो like oral tales वगैरह लिखे थे, कहानी लिखा था, वो किस लैंग्वेज में था, it is in Pali. okay, and it was written during the first millennium CE. okay, जटाका. सो ऐसे करके ये जटाका लाइक एक ये जटाका टेक्स्ट में एक स्टोरी है. ओके, उस स्टोरी का नाम है गंडा टिंडू जटाका. ठीक है, सो उस एक स्टोरी में गंडा लाइक जटाका में गंडा टिंडू जटाका वाला एक स्टोरी है. तो उस स्टोरी में एक विकेट किंग के बारे में लिखा है. ठीक है, सो विकेट मीन्स बहुत बुरा है कि नहीं, शैतान वाला किंग के बारे में. वेराज हमने लाइक पहले क्लास में पढ़ा था कि किंग दे यूज टू कंसिडर देमसेल्फ एज गॉड. पर इस लाइक टेक्स्ट में क्या था कि किंग को क्या बोला था, विकेट किंग बोला था. ठीक है, सो इसमें इस राजा के बारे में नहीं, कॉमन पीपल के बारे में है, लाइक बूढ़े आदमी, लाइक एडली वुमेन एंड मेन के बारे में है, कल्टिवेटर्स के बारे में है, हॉर्डर्स. ठीक है, एनिमल हॉर्डर्स, लाइक विलेज बॉयज एंड गर्ल्स, इवन एनिमल के बारे में मेंशन है इस बुक में जटाका में. ठीक है, गंडा टिंडू जटाका में. सो इसमें क्या लिखा है कि लाइक सभी लोग क्या कर रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ कि राजा क्या किया, अपने बारे में उनके प्रजा क्या सोचते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना वेश बदल लिया. ओके, सो ही डिस्गाइज हिमसेल्फ. ओके, सो उसने अपना वेश बदल के गांव में चला गया. तो उसने गांव वाले से लाइक ही स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद द पीपल ऑफ द विलेज. ओके, सो उसने जब कम्युनिकेट किया ऑर्डिनरी पीपल के साथ, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सभी गांव के वाले, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर कर्सिंग द किंग्स. ओके, कर्स कर रहे थे, बुरा बुरा बोल रहे थे कि ये राजा शैतान है, ये बुरा है, ऐसा ऐसा बोल रहा था. इसकी वजह से क्या है, हम लोगों को सब दुख सहना पड़ रहा है. ठीक है, वो लोग कंप्लेन कर रहे थे, लिटरली राजा के बारे में कंप्लेन कर रहे थे. लाइक ऐसे बोल रहे थे कि डे में क्या होता है कि रात को हमको बाहर से रॉबर्स आके क्या करते थे, लूटते. दे यूज टू रॉबर्स. पर डे टाइम में क्या होता है, राजा के टैक्स कलेक्टर दे यूज टू कम एंड रॉबर्स. सो हमें दिन में भी चैन नहीं और रात में भी चैन नहीं. दे यूज टू लाइक एक्सप्लॉइटर्स. ओके, बहुत टॉर्चर करते हैं. तो लाइक क्या करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो इस सिचुएशन को फेस लाइक इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमको अपना गाँव छोड़ के हमें जंगल की तरफ जाना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए. ठीक है, तो इस स्टोरी से भी हमको क्या, राजा रियली लाइक जैसे हरिसेना ने लिखा था कि ही वॉज द लाइक रिमूवर ऑफ द सॉरो, ये लिखा था, लाइक ही वॉज द गिवर ऑफ ऑल द प्रॉस्पेरिटी एंड गुड थिंग्स.
टू द कॉमनर्स, ऐसा लिखा। सो यहाँ से हम दोनों स्टोरी को कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। एक जटका स्टोरी में बोल रहा है कि राजा वॉज अ विकेट किंग, एट द सेम टाइम लाइक हरिसेना बोल रहा है कि ही वॉज द गिवर ऑफ ऑल द गुड थिंग्स बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा मिसमैच हो रहा है ना। सो लाइक इससे ही हमको व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड इज द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग्स एंड हिज सब्जेक्ट्स। ओके, स्पेशली कहाँ पे, स्पेशली इन द रूरल पॉपुलेशन। ओके, सो राजा लोग क्या करते थे कि अपना ट्रेजर भरने के लिए, ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि दे नीड रिसोर्सेज टू मेंटेन देयर आर्मीज, टू मेंटेन देयर ऑफिशियल्स है कि नहीं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को, टू मेंटेन देयर फोर्ट्स, to maintain their capitals, okay, to safeguard the like kingdom or the empire. They need resources. So there should be always, their treasure should be filled with like रिसोर्सेज, राइट। सो इसी के लिए वो क्या करते थे कि लाइक कॉमनर्स लाइक कॉमन लाइक ही वेंट टू हिज सब्जेक्ट एंड कलेक्ट द टैक्सेस एंड रिसोर्सेज फ्रॉम थ्रू ऑपरेसिव मेजर्स। बहुत ज़्यादा टॉर्चर वगैरह करके वो लोग क्या करते थे, उन लोगों से ट्रिब्यूट व टैक्सेस क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। ओके, सो लाइक उसी टाइम पे क्या होता था कि लाइक जो नहीं देते उन लोगों को क्या करते थे, लाइक राजा के जो आर्मी वगैरह, दे यूज टू टॉर्चर देम, है कि नहीं। सो उन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। जो वो लोग क्या करते थे, हाई टैक्स का डिमांड करते थे ना, तो उन लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं होता था, तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग जंगल की उन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करेंगे, जंगल की तरफ ही भागना पड़ेगा ना। तो इस स्टोरी में क्या लिखा है कि like forest was the only last option that was remained. Okay, so ऐसे ही करके उसी टाइम पे क्या, उस हाई टैक्स को भरने के लिए लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाया, उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने की, लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, सो लाइक इसी टाइम पे क्या हुआ था कि इतना ज़्यादा लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वगैरह भी बढ़ा था, वाई बोलने से, टू लाइक मीट द डिमांड ऑफ द किंग। ओके, टू लाइक जो टैक्स का डिमांड बढ़ रहा था, उस टैक्स का डिमांड को भरने के लिए क्या कर रहे थे, एट द सेम टाइम villages they were working so harder. Okay, they are starting applying new strategies, okay, for production, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उन लोगों के पास भी ज़्यादा रिसोर्स आएगा तो they were able to pay the taxes to the kings. If they will pay the taxes, that means they will be free from any kind of oppression and the exploitation or the any kind of torture. Okay, so दिस वॉज द स्टोरी। सो आप लोगों ने इस स्टोरी से जानना ही होगा कि लाइक मैंने बोला था कि प्रशस्ति, स्पेशली प्रशस्ति क्यों लिखते हैं, प्रशस्ति किसी को प्रेज करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। सो राजा के अंडर में काम कर रहा है, राजा उसको क्या कर रहा है, लाइक गिफ्ट्स वगैरह, ट्रिब्यूट वगैरह, हाई रैंक वगैरह दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसके राजा के बारे में तो अच्छा ही लिखेगा ना। तो लाइक उन लोगों ने क्या किया है, बुरा तो कुछ नहीं लिखेगा, बुरा लिखेगा तो पनिशमेंट देगा, है कि नहीं। तो इसलिए क्या किया है कि दूसरा बुक वगैरह का भी रेफरेंस लेके, रियली द किंग वॉज लाइक दैट माइटी, इतना ज़्यादा वो क्या था, लाइक फुल ऑफ डिवोशन एंड हम्बल पर्सन था या नहीं। क्या किया है, लाइक द स्टोरीज दे ट्राई टू लाइक कंपेयर द डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स और द इंस्क्रिप्शंस और द एविडेंसेस, ओके, टू understand the like real perception of the kings. Okay, so this was the real story. Okay, so we cannot say that the king was really the god, or we cannot say the king was really a wicked king, because there was not a sufficient evidence we can understand it clearly. So this was the popular perception of the king. So I hope you all have understood a bit from this popular perception of kings. So if you have any confusions or questions, please do ask me a question, okay, and clear your confusion. So thank you very much and have a nice day.